Do you know how people in highlights look from the underworld? No, of course you don't. They look like cops and eagles whose backs are sentences for the soul of a woman. I lived in a home provided by the state with 7 brothers and sisters and a pig. Out on the barren stage where nothing grew, not even a tree. But from the window, I could see the cones park walls with apple trees raising above them. It was the garden of paradise. There stood many angry angels with flame swords protecting it. But for all that, I and the other boys found a way to the tree of life. Now you despise me. You say you don't. But you despise me all the same, no matter. One time, I entered the garden of paradise. It was to weed the onion beds with my mother. Near the orchard stood a cactus pavilion, shaded and overgrown with jasmine and hyacinths. I didn't know how it was used for.
afraid I had never seen anything so beautiful. We must go away. But we must talk first. That is, I must speak. For until now you have done all the talking. You have told me about your life. Now, I will tell you about mine. Then we will know each other through and through before we start on our journey together. You see, my mother was not of noble birth. She was brought up with ideas of equality, woman's freedom, and all that. She had very decided opinion against matrimony. And when my father looked at her, she declared that she never be his wife. But she did so far on that. I came into the world against my mother's wishes. I discovered and was brought up like a child of nature by my mother and taught everything that a boy must know as well. I was to be an example of woman being as good as a man. I was made to go about with both clothes. I could take care of the horses and harness and saddle and tongue and hog and all such a thing. In fact, all over the same woman servant taught to do man's work. With the result being that the property came near being wrong. So, we became a laughing stock of the countryside. अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, कुछ बात करनी है। मैंने देख लिया था, आप बाहर से सुन रही थी। काफी देर हो गई। और हमें आज ही फैसला करना है। बैठिए। मैं अपनी कुछ चिट्ठियां लेने के लिए पोस्ट ऑफिस गया था। इन्हें पढ़कर पता चला आप काफी दिनों से मेरी डाक दबा लेती हैं। जो चिट्ठियां मैं लिखता हूं और जो लोग मुझे भेजते हैं वो पहुंचती ही नहीं। नतीजे के तौर पर मेरा वक्त तो बर्बाद हुआ, साथ ही मेरे काम का सत्यानाश भी हो गया। मैंने भी आपकी कुछ चिट्ठियां जो आपको लिखी गई थी बीच में ही रोक दी। इनको पढ़कर साफ जाहिर होता है कि आप मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें यह बताकर कि मेरी दिमागी हालत एकदम खराब हो चुकी है और आपको इसमें अच्छी खासी कामयाबी भी मिली है। कर्नल से लेकर रसोइये तक सब ये मानते हैं कि मैं पगला गया हूं। मेरी बीमारी की असलियत क्या है ये भी सुन लीजिए। दिमागी तौर पर मैं एकदम दुरुस्त हूं। जैसा कि आप जानती हैं, मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा हूं और एक बात होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारियां बनती हैं उन्हें भी। मेरे जज्बात पर मेरा पूरा काबू है, इसलिए मेरी इच्छा शक्ति अभी जीवित है। लेकिन आपके वार इतने तीखे और सख्त हैं, बहुत ही जल्दी मैं अपनी धुरी से उतर जाऊंगा और फिर धड़ाम। देखिए, इन दीवारों पर देखिए, इन वॉलपेपर को देखिए। जो गवाह है इस कमरे में हुए तमाम गुनाहों का
इन कागजात को देखिए, जिन पर मैं उन पापों का कहानियां लिखता हूँ। और मुझे भी देखिए, यहाँ कोई मुस्कुराता चेहरा नजर नहीं आता। जो आप उठते हैं मेरी तरफ, गुस्से में उठते हैं, और बीच का ये जाती है, मुठिया कसरत है। और तमाम लोगों का गुस्सा, चलन, शक, और मैं तमाम लोगों का गुस्से, चलन और शक का शिकार रहा हूँ। मैं जो कपड़े पहनता हूँ, उसमें से वो आती है दूसरे लोगों को चुनने की। कई बार मैंने धुआं बत्ती करके इस घर को साफ करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ सोता हूँ और सपने देखता हूँ, मुस्लिमों की, उनकी खून की, मुकदमे की। मैं क्या करूँगा? Just now I have a mother case report, वो तो मैं संभाल लूँगा। लेकिन सबसे भयानक चीज है जो शादीशुदा लोगों को अलग करना। किसके लिए? आपके लिए, आपकी बच्ची के लिए, यहाँ तक कि आपकी माँ और आपके नौकरों के लिए किसका था? ज़हनी तकलीफों से गुजरा, चोटें खाई, मेरी नींदें हराम हो गई। आपकी फिक्र में मेरे बाल सफेद हो गए। क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि आप अपनी जिंदगी मजे से जी सके। जमाने की फिक्र से बेपरवाह, बूढ़ी होकर भी आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकें। आपकी खातिर मैंने गुलामों से बदतर जिंदगी जी। Last, my father was separated from his defeated condition. My mother became what I don't know. But often she had the cramps and acted queerly. Sometimes sitting in the attic or the orchard. And would even be gone all night at the times. Then came the big fire, which of course you have heard about. The house, the saddles, everything was burned. Under circumstances that pointed strongly to an incendiary. For the misfortune happened, the quarterly after the insurance was due, and the premium sent in by my father, certainly delayed by his messenger, so that they arrived too late. ऊपर देखता हूं तो आसमानों से भी यही रोने का आवाज आते हैं। कोई चीखता है मेरे ऊपर, तुम धोखेबाज हो, मोहब्बत करने वाले को जुदा करते हो, तुम मोहब्बत की दुश्मन हो। बीबी इल्जाम लगाती है एक तरफ से, दूसरे तरफ से काबिल, और इस तरह से सैकड़ों पन्ने भर जाती है। आखिर असास आदमी आता है, उनमें से एक को अलग ले जाते हैं, मुस्कुराकर पूछता है एक बहुत आसान सवाल। People coming and out. On one day, the door was left open. I sneaked in, and behind was covered with the pictures of kings and emperors and a red finch resting at the window.
Now you understand what I mean? I had never been in the castle and how my thoughts were and then they returned ever after. Little by little the longing came on to the experience for once the pleasure of anything. Then my heart saw it coming. There was only one exit for the great folk, but for me, there was another. And I had to choose that. I started to run, scrambled through raspberry hedge, and I saw strawberry beds and came to a stop on the roadside. There! I saw it in white dress and in white slippers and stockings. It was you. I hid under the heap of weeds. Until, you understand? Where justice speak to me, lay on the ground, rank it. इस तरह मधुकर में ले जाता है और यही सवाल पूछता है। वो लोग चकित भ्रमित खड़े रह जाते हैं और बता नहीं पाते हैं कि उन्हें एक दूसरे से असल में शिकायत क्या है या क्या है। कोई कहता है कि यह सलाद अच्छा नहीं बना। बीबी कहता है कि उन्होंने उस दिन एक गलत शब्द बोला था। आखिर कुछ नहीं निकलता इससे, लेकिन घर चार दीवारों के भीतर जो ज्यादतियां होती है, जो तकलीफें दी जाती है, वो सब मुझे भुगतना होती है। I gazed at you, walking among the roses, and I thought, if it is true that the thief on the cross could enter heaven and dwell among the angels, it was strange that the poor child and God's could not enter into the castle's park and play with Countess' daughter. Oh, Miss Julie, a dark man lay on the couch of it. A horse may be caressed by a lady's hand, but a servant? Yes. Yes. Sometimes there is tough enough in a man, whoever he be, to swing himself up in the wall. But how often does that happen? My father was utterly loose. To know where to give money to remember. Then my mother suggested that he try to borrow from a man who had been her friend in her years. A brick manufacturer here in the neighborhood. My father made the loan, but wasn't able to pay any interest. With surprise. Then the house was riven. Do you know who bought the house? Do you know who bought the house? Do you know who bought the house? My mother. My mom. Do you know who the manufacturer was? Her lover. Her lover. Her lover. Do you know who his son it was? Do you know whose money it was? My mother's. My mother's. There was no contract. My mother had some money. Which she had not wished to have in my father. Therefore, she trusts to her friends care. All of this came to my father's knowledge. All this came to my father's knowledge. He couldn't proceed against him. He couldn't Wasn't paid his wife's rent. It wasn't proved that his boss, his wife's money. That was my mother's revenge. I'm taking the He revenge. was ready to shoot himself. Was it petty that he tried and failed? He was ready to Well, he lived with the devil. that he tried. And my mother paid full penalty for her mistakes. And my mother. आपकी
खातिर, आपकी खातिर मैंने गुलामों से बदतर जिंदगी जी। अपने आपके करीब पहुंचकर मुझे ये लगता मैं अधूरा नहीं हूं, पूरा हो गया हूं। इसलिए मैंने आपको मनमानी करने दी। मैं क्योंकि फौज में कमांडर की हैसियत रखता था, घर में गुलाम बन गया हूं। जैसे आप नचाती हैं नाचता था। आपको हमेशा अपने से ऊंचा, ज्यादा आत्ममंद समझता था। आपको ऐसे देखता था जैसे एक बीमार बच्चा अपनी मां को देखता है। सारे हुकूक आपके थे। आपने मुझ पर जादू कर दिया था। देखिए मेरी तरफ, मैं क्या कभी किसी औरत का प्यार जीत सकूंगा? मुस्लिमों की बात सुनते सुनते मैं खुद मुस्लिम सा लगने लगा। किसी की हिम्मत नहीं मुझसे दोस्ती करे, क्योंकि शहर के बहुत से लोगों को मैंने उधार का पैसा वापस करने के लिए मजबूर किया है। सब दुश्मन हो गए हमारे। ओह, it is a misery to be a man. But to listen to the story, do you know what I did? I ran into the middle, threw myself in with my pants on. I was pulled out and got in fishing. But the following Sunday, when all my family went to visit my grandmother, I contrived to stay at home. I scrubbed myself well, put on my best clothes such as they were, and went to the church so that I might see you. I saw you. Then I went home with my mind made up to put an end to myself. But I wanted to do it beautifully and without pain. I happened to remember that the Arabic blossoms are poisonous. I knew where there was a big Arabic bush in full blooms. I stripped off its stitches and made a bed of it in the oat bin. Have you ever noticed how smooth and breezy oats are? Yes, smooth as women's are. Well, I get in and lay down the cover, fell asleep. When I woke up, I didn't die as I see. What I wanted, I don't know. But through the vision of you, I made to realize that how hopeless it was to rise above the conditions of my birth. आपने मुझ पर जादू सा कर दिया था। आपकी ताबेदारी करना अपना फर्ज समझता था।
मेरे हाथ में एक कच्चा आलू देकर कहे कि अमरूद है तो मैं मान जाता था। आप इस कदर हावी थी मेरे ऊपर कि चाहती तो मुझसे गंदे से गंदा गुनाह करवा सकती थी, पर आपके पास अकल कहाँ थी? मेरे फैसले रद्द करके सब कुछ अपने ढंग से ही करती रही। और आज जब मुझे होश आया तो मुझे लगा मैं अपनी इज्जत पूरी तरह से गंवा चुका हूं। अब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं कुछ बड़ा काम करूं या कुछ ऐसा हासिल करूं जिससे लोग अश अश कर उठें। और अगर ये नहीं तो खुदकुशी। मैं सरहद पर लड़ने जाना चाहता था, पर अनुमति नहीं मिली। तब मैंने अपना रुख साइंस की तरफ किया। लेकिन अब जब मेरी मेहनत का फल मेरी मुट्ठी में आने को था, आपने मेरे हाथ ही काट दिए। और आज अब मैं बर्बाद हूं, बेइज्जत हूं। और इस हालत में अब मैं जिंदा नहीं रह सकता।